families of the Delhi police personnel who were injured in the recent student protest in Delhi allege that the police officers faced the brunt of the violence during the agitation. The families allege that the ordeal had received little public attention despite the injuries suffered by many personnel. Addressing a press conference in New Delhi, the families screened videos showing attacks on the police personnel and alleged that anti-social elements had infiltrated the protests, citing the serious injuries sustained by several officers, many of whom they said are still undergoing treatment. The families called for justice for injured police personnel as well. Now, an ACP's daughter alleged that her father had almost been lynched at the protest site. My father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी. उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था. हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी. वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी. और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे. और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए. मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए. और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा. ASI's wife also said that her husband was targeted in the protest and was also beaten. मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए ASI के पद पर हैं. जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी. प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था. वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे. 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए. और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है. और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें. फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे. उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था. The families, in fact, showcase the kind of difficulties that their spouses as well, their fathers had to face as they engaged the crowds in Jantar Mantar. The family said that the police side of the story has to also be said. Some of them said that they were shocked when they came to know that their loved ones were in fact portrayed as criminals
on social media. Some of them said that they were even shocked that those who had engaged in violence had approached the Supreme Court, and therefore they decided to approach the court as well, saying that their side of the story should also be heard before the court, in fact, engages with what has happened on the ground. Interestingly enough, the Supreme Court has said that those who do not have criminal antecedents, they have to be, in fact, let go, and the police action should be withdrawn from them. Meanwhile, the court has also, in fact, asked for those with criminal antecedents to be investigated when it comes to the violence that happened at Jantar Mantar. So some of the family members also came out and said that they want the police side of the story also to be heard. Some of them coming and saying the kind of injuries that their fathers and husbands had to suffer because of the violence that had broken out. One of them, whose husband was on duty at Jantar Mantar, said that her husband's helmet was in fact shattered, and she was in fact worried if that stone that was hurled at her husband had it in fact broken through the helmet and hit him in the head. One of the daughters of the police officer who was there said that her father's uniform was in fact soaked in blood, and he had 4 stitches on his head.